Chalo abhi, today we are going to study third chapter, arithmetic progression. To understand arithmetic progression, let us first of all understand what is a sequence. After sequence, I will explain you what is AP, arithmetic progression. Once you understand geometric progression, also I will give one example. But today, in this syllabus, SSC 10th standard, we are not studying geometric progression. We are studying about arithmetic progression, okay? So let's start about a sequence. See, when you arrange numbers, set of numbers, you studied what is a set in ninth. When you arrange a set of numbers, or you arrange a number in a set, in a particular pattern, we call it a sequence. For example, natural number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it's a sequence, remember. Sequence, yes, what is sequence like? We have 1, 2, 3, 4, so on. This is natural number, okay? This is a sequence of natural number. Now I may give you a sequence of integers, whole numbers, etc. A particular pattern. Now what is an arithmetic progression? Now if you see the difference between these two, the difference is 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. 4 minus 3, 1. So we can say all these numbers have a common difference. If the common difference you represent using capital D, if this is constant, then we say the given sequence is AP. Let us take another example. If I give you set A, and I give you set A like 100, 80, 60, 40, so on. Please see the difference. Here, look at this. The second term, if you second term minus first term, you subtract second term minus first term, difference is how much? Minus 20. 80 minus 100. What is the difference? Minus 20. 60 minus 80. What is the difference? Minus 20. 40 minus 60. You can see the difference. 40 minus 60. Difference is minus 20. So we can say common difference D is minus 20, whether it is plus or minus. Then we say the given sequence is a arithmetic progression. Now, if I give you, now this is AP, remember. Now, these all are, this is examples. Both examples are AP, arithmetic progression. Now, if I give you say one set, like I give you 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. नहीं, ये भी नहीं होगा, because again the difference is 2. I give you 4, let's consider 1, 4, 16, 25, and so on. Please see the common difference between them. This difference is 4 minus 1 is 3. The next is 16 minus 4 is how much? It is 12. Then see, 25 minus 16 is 9. Now please see the difference, common difference. Is there any common difference? No, the difference is not common. If difference is not common, but this is multiple, they are squares, square terms, 1 square, 2 square, 3 square, and so on. Then this is not a geometric
This is geometry expression, not a what you call arithmetic progression. Such when D is not common, it is not AP. Okay, D common, D constant. Here 1 1 1, here minus 20. Then it is AP. Not constant, not AP. चलो, कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ज्यादा सोचो मत. ज्यादा सोचने गड़बड़ होती है. इतना ही सोचो. अगर कॉमन डिफरेंस है तो गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नहीं है तो वो एपी नहीं है. और इस बरस दिस ईयर एसएससी वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली एपी. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1. Now practice set 3.1. चलो चालू करते हैं. Practice set 3.1. Which of the following sequence are AP? They are given you a sequences. I think they are given you 8 sequences, 8 questions. All are sequence. You have to find out whether if the given sequence is AP or not. If they are AP, then what is the common difference? Okay. See, if the common difference you find out, then only you will realize it's AP or not. Okay. You have to find common difference. If you see that there is a common difference, then it's AP, and mention the common difference whatever it is. Okay. So write the first question. First question is 2, 4, 6, 8. They are given you 2, 4, 6, 8, so on. Look at this. This is called T1. First term, second term, third term, fourth term. So what is T2 minus T1? See what is T2. T2 is 4 minus 2. It is 2. Then go for T3 minus T2. T3 minus T2. It is 6 minus 4. It is again 2. What is T4 minus T3? It is 8 minus 6 equal to 2. Now write down, since common difference equal to 2, which is constant, therefore given sequence is arithmetic progression AP. Go for next question. 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 3, and so on. Okay, this is T1, T2, T3, T4. So go for T2 minus T1. It is 5 upon 2 minus 2 upon 1. 2 means 2 upon 1. Solve करो इसको LCM 2. 2 1 2 LCM. Cross multiply करो 5 1 5 minus 4. Common difference, ये difference क्या आ रहा है? I won't say it's common. Whether it is common है या नहीं हमें देखना है. Difference is half. Go for T3 minus T2. T3 minus T2 is 3 upon 1, मतलब 3 minus 5 upon 2. So ये है denominator 2. Cross multiply करो 3 2 6 minus 5. You get 1 upon 2. Next, T4 minus T3. T4 minus T3. What you get? T4 is 7 upon 3 minus 3 upon 1. ये क्या है? Denominator 3 है. Cross multiply करो 7 1 7 minus 9. You get minus 2 upon 3. Please see here. Here 1 upon 2 is not equal to minus 2 upon 3. Therefore, there is no common difference between the
consecutive terms of the sequence. There is no common difference between the consecutive terms of the sequence. Therefore, the given sequence is not AP. यहाँ आपको पता चलेगा हाउ टू आइडेंटिफाई AP और नॉट. देखो तीनों हमने जो एक के पीछे एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देखे, तो ये देखो ये दोनों एक आ रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है. Hence it is not AP. Go for next, third question. अभी हम इसको पार्टीशन करेंगे बोर्ड को, so that we can take at least 4 questions at a time while we are solving. So we go for next question, question number 3. इसका हम लोग डिवीजन पार्टीशन करते हैं 1, 2 और 3. थर्ड क्वेश्चन का -10, -6, -2, 2, -10, -6, -2 and 2. आगे है मेरे ख्याल से ये डॉटेड लाइन्स. Therefore ये T1, T2, T3, T4. So go for T2 minus T1. It is -6 minus of -10. कितना होता है? -6 plus 10. So this is 4. So T2 minus T1 is 4. Then you go for T3 minus T2. T3 is -2 minus of -6. It is -2 plus 6. Therefore T3 minus T2 is again 4. Go for next term. T4 minus T3 equal to 2 minus of -2. This is 2 plus 2. Therefore T4 minus T3 equal to 4. Please see. Here common difference is 2. Sorry, common difference is 4. Therefore, given sequence is arithmetic progression. Now come to question number 4. Question number 4 क्या है? 0.2, 0.33, 0.333 and so on. 0.3, 0.33, 0.333, and so on. So what is T2 minus T1? It is 0.33 minus 0.3. Sorry, 0.3. तो 3 के बाद कुछ नहीं है, तो ये 0 होगा, 30. So this will be 33 minus 3 will be 0.03. See, T2 minus T1 difference is 0.03. What is difference of T3 minus T2? 0.333 minus 0.330. This will be 0.003. देखो 0.333 minus 0.330, तो क्या हो रहा है? 0.03. So T3 minus T2 की ये वैल्यू है. Now you can see this too. It is not common because since difference between the two consecutive terms of sequence are not equal. Therefore, the given
sequence, sequence is not AP. ये भी AP नहीं है. Now we come to fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है? 0, -4, -8, -12. 0, -4, -8, -12 and dot 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 dot. चलो सॉल्यूशन लेते हैं. क्या ये T1, T2, T3, T4. So T2 minus T1 equal to -4 minus 0. Therefore T2 minus T1 is -4. ये फर्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस आया. देन now T3 minus T2 is -8 minus of -4. Therefore एक स्टेप लिखेंगे उसके बाद वापस -8 plus 4. Therefore T3 minus T2 is again -4. T4 minus T3 is -12 minus of -8. So this is -12 plus 8. Therefore T4 minus T3 is -4. Therefore, since common difference equal to D is equal to -4, therefore given sequence is AP. चलो इसको अभी इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Now question number 6. Start with question number 6. अपने हाथ में टेक्स्ट बुक रखो और नोटबुक सॉल्व करो. टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखो, यार प्रैक्टिस होती है. हाँ, क्वेश्चन नंबर, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6. This has to be AP because common difference will be 0. See solution. This is T1, T2, T3. Therefore, T2 minus T1. What will be? अगर तुम चाहे तो लिखो here. अगर कुछ टीचर्स बोलते हैं what is T1, T2, T3, तो लिखो, लेकिन डायरेक्टली किया तो भी चलेगा. अंडरस्टैंडेबल सीक्वेंस के टर्म्स है. T1 equal to -1/5, T2 equal to -1/5, T3 equal to -1/5. Therefore, T2 minus T1 equal to -1/5 minus of -1/5. You get -1/5 plus 1/5. Therefore, T2 minus T1 equal to 0. Now we go for T3 minus T2. Again this is -1/5 minus of -1/5. So -1/5 plus 1/5. Therefore T3 minus T2, this also is 0. Now therefore, since common difference equal to D is 0,
constant. Therefore, the given sequence is A dot P, arithmetic progression. We go to question number 7. Question number 7 क्या है भाइयों? Let's see. भाइयों और बहनों, बच्चों. 7th is 3, 3 plus root 2. उसके बाद क्या है? 3 plus 2 root 2. सॉरी 2. उसके बाद होगा 3 plus 3 root 2 लगा ही था. 3 plus 3 root 2 and so on. ये सीक्वेंस है. चलो फाइंड करते हैं. हमें तो क्या, हमारा काम ही है सॉल्व किया, क्वेश्चन देने का एग्जामिनर का काम है, और सॉल्व करना हम बच्चों का और गाइडेंस करने का टीचर का काम है. चलो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. आप लोग जानते हैं व्हाट इज T1, 3, T2, 3 plus root 2, T3, 3 plus 2 root 2, T4, 3 plus 3 root 2. Therefore, what is T2 minus T1? T2 minus T1 is 3 plus root 2 minus 3. Therefore, T2 minus T1 क्या है भाई? root 2. Now, take T3 minus T2. T3 है 3 plus root 2 और T2 है, एक मिनट इसको जरा, T3 माइनस T2. T3 क्या है? ब्रैकेट में लिखो 3 plus 2 root 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो T2 is 3 plus root 2. So solve करो 3 plus 2 root 2. ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस जब आप ब्रैकेट निकालोगे एंड देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस इंटू प्लस माइनस 3, माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2. तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या बचा? 2 root 2 minus root 2 is root 2. Therefore, we can say T3 minus T2 is also root 2. अब आते हैं T4 minus T3 पे. Now, T4 minus T3. थोड़ा सा इस साइड लेते हैं. T4 minus T3. T4 टर्म क्या है? देखो, T4 क्या टर्म है? T4 is this. ब्रैकेट में लिखो 3 plus 3 root 2 माइनस T3 हमने अभी देखा 3 plus 2 root 2. ओपन करो ब्रैकेट, 3 plus 3 root 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 root 2. तो ये 3 minus 3 डिवाइड नहीं होता, सबट्रैक्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता. 3 minus 2 is 1, ये भी root 2. So T3 minus T2 is also T4 minus T3. T4 minus T3 is also root 2. Therefore, we can say, therefore, since common difference equal to D equal to root 2, it's constant, same. Therefore, the given sequence is A, P. इसको इरेज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती है. ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर. बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान. आपको सिर्फ
वैल्यूज दी हैं T3 T2, कॉमन डिफरेंस निकालना है या Tn निकालना है या n निकालना है, आगे जाके देखेंगे, s निकालना है, Sn मतलब बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। 8th क्वेश्चन, 127, 132, 137, 127, 132, 137 एंड डॉट डॉट। चलो भाई इसको देखते हैं। Solution. Here T1 क्या है भाई 127, T2 132, T3 137। तो स्टार्ट करो। Therefore T2 माइनस T1 कितना है 132 माइनस 127। Therefore T2 माइनस T1 is 5। नेक्स्ट करो। नाउ T3 माइनस T2, T3 क्या है 137 माइनस 132। Therefore T3 माइनस T2 भी है 5। सो कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो। Therefore since common difference equal to 5 equal to constant, therefore the given sequence is A P. Now we go to second question, question number 2 of practice set 3.1. Write the AP whose first term is A, first term is T1 और A, यहाँ पे T1 भी लिख सकते हो या A भी लिख सकते हो, एंड कॉमन डिफरेंस दी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया है उन्होंने, देखो। कॉमन डिफरेंस A इज 10, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं, फर्स्ट टर्म T1 is equal to A1 is 10 and common difference is 5. क्या दिया है A equal to 10 and D equal to 5. We know, solution चालू करो। We know T1 equal to A equal to 10, तो T1 तो अब मालूम है। Now what will be T2? T2 will be T1 plus D, that will be 10 plus 5. So what will be T2? T2 will be 15. T1 हम जानते हैं, we know T1. T2 is 15. Therefore what will be T3? T3 will be T2 plus D, common difference. Therefore T3 will be 15 plus 5. Therefore T3 is 20. Now what is T4? T4 is T3 plus D, 20 plus 5. So T4 कितना होगा 25. So we can find many terms, but 4 term काफी हो जाएंगे. Therefore the required arithmetic progression is 10, 15, 20, 25 and so on. Simple. Now go for next question. In next question they say A is equal to minus 3 and D equal to 0. A equal to minus 3, D equal to 0.
देखते हैं क्या होता है ये सॉल्यूशन। वी नो, हम क्या जानते हैं, T1 इक्वल टू A इक्वल टू -3। T1 तो हमें मिल गया, therefore T2 क्या होगा, T1 प्लस D, that is -3 plus 0, therefore T2 is also -3. Now what is T3? It will be T2 plus D, therefore T3 equal to -3 plus 0, therefore T3 equal to -3. Now T4 तक निकालो, T4 equal to T3 plus D, therefore T4 is -3 plus 0, so T4 is -3, काफी है। Therefore the required arithmetic progression is -3, -3, -3, -3, ... देखो कॉमन डिफरेंस तो दिया है तो यह एपी होना ही है, सिर्फ लिखना है कौन सा एपी है, किस तरह से वो दिखता है, व्हाट इज द सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है हमें देखना है। They are given us A is equal to -7, D is half. A equal to -7, D equal to 1/2. अब सॉल्यूशन निकाल लो। A equal to -7, D equal to 1/2. Solution. We know, हम क्या जानते हैं, T1 equal to A equal to -7. First term we know. Therefore, T2 क्या होगा, T1 plus D. So -7 plus half. -7 plus half. So 2 7s are 14. So ये होगा -14 plus 1/2. So this will be, what will be T2? It will be -13/2. So ये है second term. What will be T3 now? T3 will be T2 plus D. T2 is -13/2 plus 1/2. LCM is 2. ये -13 plus 1. Therefore T3 is -12/2. Sorry, -12/2. So 2 1s are 2 6s are. Therefore T3 is -6. So therefore आंसर लिख दो। Therefore the required AP is, क्या है वो, पहला टर्म -7, then -13/2, then -6 and ... Now we go to question number 4. Question 4. A is -1.25, D is 3. A is -1.25, D is 3. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। Solution. We know that T1 equal to A equal to -1.2. तो फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं, एक दिया हुआ है। Therefore what will be T2? T2 will be T1 plus D. So what will be T2? It will be -1.25 plus 3.
सो T2 क्या होगा 1.75 पॉजिटिव. Next, now T3 will be T2 plus D. This will be 1.75 plus 3. तो T3 क्या होगा 4.75. T4 निकालो. T4 equal to T3 plus D. So it will be 4.75 plus 3 equal to T4 क्या होगा 7.75. अभी सीक्वेंस लिखो आंसर. Therefore, the required arithmetic progression is minus 1.25, 1.75, 4.75, 7.75 and so on. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन था. अब क्या दिया उन्होंने A 6 and D is minus 3. A is 6, D is minus 3. तो स्टार्ट करो सॉल्यूशन. वी नो दैट हम क्या जानते हैं T1 equal to A equal to 6. First term we know. Therefore, second term T2 will be what? T1 plus D. It will be 6 minus 3. Or you can write 6 plus of minus 3. तो ये होता है 6 minus 3. So T2 will be 3. Now we go for T3. T3 will be T2 minus D. Sorry. T2 plus D. So T3 will be T2 is 3 plus of minus 3. So T3 will be 3 minus 3. T3 will be 0. Now you go for T4. T4 equal to T3 plus D. This is 0 plus of minus 3. Therefore T4 is equal to minus 3. Therefore, answer, the required arithmetic progression is 6, 3, 0, minus 3, dot, dot, dot. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 6. दे आर गिवन अस A equal to minus 19 and D is minus 4. Question number 6 है A is minus 19, D is minus 4. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इंक डाल के. Okay, let us start. We know that T1 equal to A equal to minus 19. पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, दिया ही है उन्होंने, A is minus 19. सो अभी नाउ गो फॉर T2. T2 क्या है? T1 plus D. सो T1 is minus 19. अच्छा एक स्टेप लिख दो, प्लस ब्रैकेट minus 4. So इसलिए minus 19 minus 4 is minus 23. T2 मिल गया minus 23. Now go for T3. T3 is T2 plus D. T2 is minus 23 plus of minus 4. So T3 क्या हो गया? Minus 23 minus 4. So T3 value is minus 27. Now go for T4. T4 is T3
plus D is minus 27 plus minus 4. So T4 will be minus 27 minus 4. Therefore T4 is minus 31. So we got all the 4 terms. So write down the required AP answer. The required arithmetic progression is minus 19, comma, minus 23, comma, minus 27, minus 31, comma, dot, dot, dot. Question number अभी 3. इसको इरेज करते हैं. Question number 3. Find the first term and common difference of each of the given AP. चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला AP देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट AP. उसके पहले ओके AP क्या है? ये है 5 1 minus 3 minus 7. उन्होंने दिया हुआ है AP is already given to you. AP is 5 1 minus 3 minus 1. 5 1 minus 3 minus 7 dot 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 dot. हमें फाइंड करना है. What they ask us to find? They ask us to find the first term and a common difference. First term तो दिख रहा है तुमको. First term, common difference फाइंड करना है. Solution here we know. या लिखो. Here we know T1 equal to A equal to 5. First term आ गया. Therefore D लिखो. Common difference D. एक लाइन लिखो चलेगा. Common difference equal to D. Therefore, D equal to T2 minus T1. That is 1 minus 5. 1 minus 5. What do you get? Minus 4. So D पहला मिला minus 4. They already given us, no, मेरे ख्याल से they already given us it's a sequence. Since the given sequence is AP, its first term A equal to T1 is 5 and common difference D is minus 4. तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म T1 is 5 and common difference D is minus 4. Go for next question. उन्हें दिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5. Next question is 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5, comma, dot, dot, dot. Solution. The given, starting में लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखा ना, starting में लिखते हैं. The given sequence is arithmetic progression. Given दिया है. Therefore T1 equal to A
इक्वल टू 0.6, पहला टर्म आ गया. कॉमन डिफरेंस equal to D. Therefore, what is D? T2 minus T1. 0.9 minus 0.6 is 0.3. तो कॉमन डिफरेंस आ गया. आंसर लिख लो. The first term T1 and common difference D of given AP arithmetic progression are 0.6 and 0.3 respectively. इज्जत से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. जो सब क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 3 है. सीक्वेंस क्या दिया है देखो. अच्छा उन्होंने दिया है 127. सीक्वेंस क्या दिया है देखो. 127, 135, 127, 135, 143, 151, dot dot dot. Okay. सॉल्यूशन चालू करते हैं. सिंस तुम ये लिख सकते हो द गिवन सीक्वेंस इज एपी या सिंस गिवन सीक्वेंस इज एपी. द गिवन SEQUEN sequence is AP G1. चलने का या गिवन लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली. ओके. व्हाट इज T1? T1 इक्वल टू A इक्वल टू 127. पहला टर्म तो मिल गया. कॉमन डिफरेंस निकालो. कॉमन डिफरेंस क्या है? D. Therefore D क्या है? T2 माइनस T1. T2 कितना है? 135 माइनस 127. 8. लिखो फाइनल आंसर. The first term T1 and common difference D of given AP are 127 and 8 respectively. क्वेश्चन नंबर अभी 4 पे जाते हैं. सब इरेज कर दो. I'll erase everything here. Go for question number 4, which is the last question. ये सब क्वेश्चन 4 है. क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने दिया है सीक्वेंस 1/3, 1/4, 3/4, 5/4 and 7/4. All are positive. क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सब क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने? 1/4. यस. 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, dot dot dot. Find out first term and common difference. Solution. The given sequence is AP. ये तो डेटा है, डाटा या गिवन लिख दो.
Therefore T1 क्या होगा? T1 इक्वल टू A इक्वल टू 1/4. फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया. कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D. Therefore D क्या है? T2 माइनस T1. So T2 कितना है? T2 is 3/4. लिख दो 3/4. It is 3/4 minus 1/4. So denominator is 4. 3 minus 1. तो D कितना हो गया? D is 3 minus 1 is 2/4. Divide करो 2 1s are 2. 2 2s are 4. Common difference ये मिला half. Answer लिखो. Therefore the first term T1 ये T1 and common difference D ये D of the given arithmetic progression are क्या है? 1/4 and half. 1/4 and 1/2 respectively. With that, 3.1 completed.